Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. This is Dr. AQ Khan once again in front of you. Today we are going to start the last lecture of this chapter, and that is preservation of ecosystem. So my dear students, let's first have a glance on the SLOs of this lesson. The SLO is identify various actions and roles that human can play in preserving various ecosystems. For that, let's have a recap. कि आप लोगों ने पहले क्या पढ़ा था, लेकिन उससे भी पहले let's see the Islamic perspective of having preserving ecosystem. क्या? And do not make mischief in the earth after it has been set in order, and call upon him with fear and lodging. Surely Allah's mercy is close to those who do good. अल्लाह के निज़ाम को मत छेड़ो और अल्लाह से मांगो, अल्लाह से तलब रखो. Al-Araf. And the second perspective one is about a hadith. According to our holy prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, all creatures are God's dependents, and the best among them is the one who most useful to God's dependents. सारे जितने भी मखलूक हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पे डिपेंडेंट है. अल्लाह से मांगते हैं. आप में से बेहतरीन इंसान वो है जो और लोगों के लिए और मुसलमानों के लिए सबसे ज़्यादा मुफीद हो. सो माय डियर स्टूडेंट्स, कमिंग टुवर्ड्स आवर रिकैप, प्रीवियसली आप लोगों ने क्या पढ़ा है? चूज फ्रॉम द डिफरेंट थ्रेट्स दैट अफेक्ट अ फूड चेन इन योर सिटी. हाउ राइट वन सेंटेंस. इसके बारे में एक सेंटेंस लिखे कि आप लोगों के ने अपने शहर में क्या देखा है जो फूड चेन को डिस्टर्ब करती है. This is a recapping activity. Next one is you see this picture and the pollution you see here that is hazardous for our health. And now this is urbanization. A lot of you see the houses, the factories and the buildings, the offices, just because of over and over population. We want to grow plants more and more, and we want to avoid these kind of things. ये देखें, जब आप लोग सी पोर्ट के करीब देखते हैं, जब आप रिवर्स में देखते हैं, and you see this kind of dumpings, this is very much dangerous for us. And another one, this is hunting. Hunting is also very much dangerous because this species will be डिस्टिंक्ट. वो हमें फिर आगे जाके एक्सटिंक्शन हो जाएगी, वो हमें नहीं मिलेंगी. हमें रोड पे ये जो डंप नज़र आते हैं, दिस इज़ आल्सो वेरी मच डेंजरस फॉर आवर हेल्थ एंड फॉर आवर एनवायरनमेंट. एंड यू हैव ऑलरेडी सीन दिस पिक्चर. हमें जो प्लास्टिक के बैग्स हैं, प्लास्टिक के रैपर्स हैं, इनको हमें नहीं फेंकना चाहिए पानी में. एंड यू हैव ऑल्सो सीन दिस पिक्चर बिफोर. और सी ये जो स्मॉल लिटिल किस्म के जो हमें परिंदे नज़र आते हैं, जो वो उनके खूबसूरत बच्चे, ये सब इससे अफेक्ट होते हैं. यू ऑलरेडी नो अबाउट द एक्वेटिक लाइफ. एंड दिस इज आल्सो यू सी द प्लास्टिक बैग. एंड दिस इज अनदर वन. नाउ लेट मी टेल यू हाउ कैन वी रिड्यूस पोल्यूशन. हाउ कैन वी रिड्यूस पोल्यूशन? क्या होगा? लेस पॉपुलेशन होगी. जब हम पॉपुलेशन को कंट्रोल कर लेंगे तो उससे वेस्ट कम जनरेट होगा. वेस्ट भी कम जनरेट होगा और रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी भी ज़्यादा होगी. और जब ये वेस्ट कम होगा तो पोल्यूशन कम होगी. इनिशियली पॉपुलेशन को भी कंट्रोल करना है और अपनी रिसोर्सेज को भी बढ़ाना है. सो इन दिस वे, like less population, more resources generation. Number two, trees provide habitat and food for organisms. We need to grow more and more plants. We need to grow more and more forests. जितने ज़्यादा हम ट्रीज उगाएंगे उतना ही ज़्यादा हमारे रिसोर्सेज बढ़ेंगे. वी शुड स्टॉप. नंबर 3, डंपिंग वेस्ट इनटू वाटर बॉडीज.
इनको प्रॉपर हमने रिसाइकल करना है, हमने रिसाइकलिंग प्लांट्स लगाने हैं ताकि ये वाटर बॉडीज में ना जाए, जिससे बहुत ज़्यादा नुकसानात होते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, you have seen three methods with the help of which we can reduce pollution, and number one is, मेरे साथ बोलिएगा, less population. Less population, growing more and more plants and trees, and number three, avoiding to throw plastic bags into water bodies, plastic wrappers into water bodies. इनको हम कम करेंगे ये तरीके से, तो इससे क्या हो जाएगा, पोल्यूशन कम हो जाएगी और हमारा क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, रैप अप करते हैं इस टॉपिक को। आइए, नंबर वन, plant more and more trees. Number two, stop dumping waste into water bodies. And number three, controlling population. These are the three ways with the help of which we can reduce pollution. And now this is worksheet time. And worksheet के लिए इस वीडियो को पॉज करें, इस पे सोचिए। The first one and the second one, 2 questions are given to you. The spread of dengue in Pakistan indicates the imbalance of food chain. The huge number of dengue mosquitoes do not have enough predators. What will you suggest to overcome this grave scenario? यानी डेंगू का जो मच्छर है उसको ख़त्म करने वाले प्रीडेटर्स नहीं है, ताकि उसको परिंदे खा जाएं, खूबसूरती ख़त्म हो जाएगा। तो इससे थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन आपको लिखना पड़ेगा। यू शुड डू इट। व्हाट मेजर कैन यू टेक एट योर पर्सनल लेवल to preserve the food chain? One thing is which is done on national level and community level. What you can do, just write your own answer regarding this. And now this is the homework time. You have already gone through these questions before, और आज एक बार फिर इसको देख लें। You can do all these questions without any problem. And now coming towards the short questions and then the long questions. So you see which one questions belong to today's topic. इसको पढ़ लो और आपको see the fifth one here. What measures can be taken to preserve our ecosystem? इसको किस तरीके से हम देख सकते हैं। नेक्स्ट के लेसन में my dear students, we have finished this chapter and inshallah कमिंग क्लास में हम आपके साथ या आप अपने आप के साथ इधर विद योर पेरेंट्स, इधर विद योर टीचर रिवाइज करना है पूरे के पूरे लेसन को। चैप्टर नंबर 2 को आपने रिवाइज करना है और उसमें जितनी एक्टिविटीज हैं, अगर उनमें से कोई एक्टिविटीज आपसे रह गई हैं तो आपने उनको भी परफॉर्म करना है। और इस तरीके से इंशाल्लाह वी विल मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर। सो बेस्ट ऑफ लक माय डियर चिल्ड्रन। अल्लाह हाफिज।